One. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning to you. Good afternoon, sir. Morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. 12 बज गए हैं. Yes. So 52 students Morning, sir. admitted. Morning. Good morning, sir. afternoon. Sir. Oh. Sir, Yes, है sir. नहीं है. Yes, sir. आ रही है So सर, आ रही है. taken शॉट लिया था. सर आपकी आवाज कट रही है सर. शॉट लिया था क्लास में. हाँ सर, ले लिया था सर. मैं आपको वीकली रिपोर्ट दे दिया करूंगा सर. आपकी वीक में जितनी क्लासेस होंगी, वीक के एंड में मैं आपको सारी अटेंडेंस दे दिया करूंगा. ठीक है. ओके सर. कैलकुलेट करते हैं एक आध मिनट. Only 55 students admitted. So today we will start chapter number 5, right? Materials. And I will share the TPT in the that WhatsApp group what you have created, right? So 58, I will start show you the screen. Right. So have you it's coming on the your screen, right? Chapter number 5, materials. No, sir. No, sir. No sir. Minute. I think now it's coming on your screen. Yes, sir. Now it's Yes, visible. sir. Yes. Yes, sir. So we will study some points in chapter number 5. Right, it's about the mass, right? So Your voice we is will breaking. study. आवाज कट we कट के will आ रही है study सर. the solid materials only. Right? सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा. Sir, nothing is clear. Now it's breaking. सर ऑडियो नहीं आ रहा आपका. आवाज नहीं आ रही है. आ रही होगी. ये It is screen में breaking. indicate. कट कट के आ रही है सर. सर बहुत बफरिंग हो रही है सर. राइट सर. तो आ रही होगा तो आवाज. ये सर थोड़ी थोड़ी आ रही है, पर सर. कट कट के आ रही है सर. So this is right. So I'll show the screen. सर आप पीडीएफ भेज दीजिए, हम में से कोई स्क्रीन हाँ. शेयर कर देगा. नहीं, स्क्रीन तो शो हो रही होगी अब तो. हाँ स्क्रीन शो हो रही है सर. Screen show हो रही है सर. हाँ स्क्रीन शो हो रही होगी. आवाज भी ठीक आ रहा होगा तो. राइट. यस सर, आवाज भी ठीक है.
सर लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन दिख रहा, कुछ और स्क्रीन आ रखी है, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही उस पे। हैंग सी हो रही है। यहाँ तो स्क्रीन में दिख रहा है which is showing on your screen। सर लैग हो रही है आपके आपकी स्क्रीन आवाज। सर आप किसी और को सेंड कर दो। सर हम में से कोई और स्क्रीन प्रेजेंट कर देगा, आप समझा दीजिएगा सर। एक मिनट। सर अब आ रही है। आ गई सर, आ गई, अब आ रही है। अब आ गया स्क्रीन। अब मैं शो भी ये भी कर रहा हूँ, सब भी कर रहा हूँ आपको। चैप्टर 5। पार्ट right, so I have sent on your WhatsApp group, right? Okay. Okay. So this is all about the chapter 5 materials. आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है अभी? स्क्रीन नहीं दिख रही सर, ब्लैक आउट है पूरा। नहीं, थोड़ा टाइम शायद। सर दिख रही है, बस थोड़ी डिम लाइट में है। हाँ थोड़ा डिम लाइट में दिख रहा है। अरे मेरा तो ब्लैक आउट है यहाँ पे, मुझे स्क्रीन भी ब्लैक है। एक मिनट वेट करो, फिर एक आध मिनट वेट करो, फिर शायद आ जाए। आ गई स्क्रीन पे? नहीं आई सर, ब्लैक आउट है। तो क्या करो, आप अपना रिसेंट टैब खुल रखा है। आप अपना जो व्हाट्सएप पे मैंने ये पीपीटी भेजा है ना, वो आप ओपन कर सकते हैं। यस सर, आप रीड आउट करते रहिए, हम भी पीपीटी से सर गो थ्रू करते रहते हैं इसी टाइम। हाँ सर वही, साथ में ठीक है पीपीटी खोल के रखते हैं, ठीक है सर। ठीक है, ओपन कर लो। राइट, सो चैप्टर 5 ऑफ मटेरियल्स, इट इज ऑफ materials only, right? Engineering materials. We are dealing with only engineering materials. Right? आपकी आवाज बहुत कट रही है। Yes, sir. Sir, your voice is buffering. आपका आवाज क्लियर आ रहा है मुझे, यहाँ इंडिकेशन भी दिख रहा है। राइट, वॉइस इज फुल। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर, आ रही है यस सर। सर, आ रही है, आ रही है। हाँ नहीं है तो आप वो पीपीटी खोल लिया आपने, राइट? तो सॉलिड मटेरियल, विद द सॉलिड मटेरियल्स, इट इज ऑफ योर इंजीनियरिंग मटेरियल and the classification based on the chemical makeup means compositions here, carbon percentage, magnesium percentage, silicon percentage, right? And next one is the atom structure, right? It may be a crystalline material, atom in the crystal, right? Or it may be plastics, they are arranged in the not a crystalline structures, or it may be a amorphous also, right? Glass is a amorphous material, right? Another classification is based on Excuse me, sir. Sir, आपकी वॉइस सर क्लियर आपकी नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है। सर बहुत ब्रेक हो रही आपकी है वॉइस सर, क्लियर नहीं है भी सर। क्लियर नहीं है। सर वॉट क्लियर नहीं है। राइट सर। हम्म, voice की क्या?
वेट। सर हेडफोन लगा के ट्राई करिए। ना हेडफोन लगा के ही ट्राई किया था पहले। सर तो अभी मैं ट्राई करिए। सर कोई ओपन स्पेस में जाके ट्राई करो। नेट कनेक्शन की वजह से हो रहा है शायद। सर नेट रिव्यू दे दो। सर ब्रेक हो रही है वैसे ही। कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत सर, फट रही है। कुछ भी नहीं। नहीं सर, अब तो एक्चुअली में थोड़ी सी भी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो अभी ये है पीपीपी। सर आप स्क्रीन शेयर करना बंद कर दीजिए सर, तो शायद अच्छी वॉइस है। हाँ, अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर, आप ढंग से आ रही है। यस हाँ, सर, अब आ रही है। तो अभी जो आपको engineering, we are dealing with the for chapter 5 is of materials, right? So we will study only solid materials, that is of your engineering materials, right? So engineering materials are classified based on its structures, right? It may be a crystalline structure, non-crystalline structure, or it may be a amorphous materials, right? Just like a glass is a amorphous material, right? Another classification is based on applications, right? Just like a spring steels will be there. So you will find handbooks for the spring steels only, right? So based on application it can be classified. Another classification is based on your means chemical composition, right? So chemical compositions means your carbon percentage, ferrous percentage, right? And your silicon, magnesium, right? Depends on your material, right? So most of the most materials fall into one distinct grouping or another, right? It may fall in one group or two groups, like so. If you see the cast iron may fall in ferrous material also, and another cast iron classification is also there. सर फिर ब्रेक हो रही है। यस सर। सर ईयरफोन लगा के कर लो। ईयरफोन लगा के ट्राई किया मैंने, it is not coming, voice is not showing, right? सर ओपन एरिया में जाके ट्राई करो, वहां से क्या पता सिग्नल आ जाए। तो ये वाईफाई से कर रहे हैं आपने या फिर मोबाइल डाटा से कर रहे हो? हाँ, वाईफाई से नहीं है, मोबाइल डाटा से है, right? And it is showing better strength, 15 Mbps is speed is there, or speed is okay, right? तो मोबाइल डाटा 15 Mbps कहाँ देता है? हाँ 50 it is showing, right? स्पीडोमीटर कुछ होता है ना, as per that app, right? यस सर, So यस। हाँ, so that is the classifications. If you see the next slide, right? Common engineering materials that fall within the scope of material science and engineering may be classified into one of the following groups, right? So it may be classified as a metals. Metals may be ferrous metals, non-ferrous metals, and its alloys, right? Next one is a ceramic materials, right? This is not in our syllabus, right? But as you can, as for classification, it is there, right? Organic polymers, right? Inorganic polymers is also there, but their application is limited, right? Most of the polymers being used is of organic polymers.
Next one is the composites, that is in our syllabus. Semiconductors, biomaterials, and advanced materials. So semiconductors and biomaterials is not in the syllabus. सर फिर ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रहा। सेमीकंडक्टर के बाद क्या बोला? जैसे वन वे में आवाज कैसे हो सकता है? बीच बीच में अगर ब्रेक हो रही है तो थोड़ा वेट करो, उसके बाद फिर सही हो जाएगी। पीपीटी से रीड आउट तुम भी साथ साथ करते रहो। राइट धन्यवाद सौरभ भाई। राइट। तो इसमें है आपका क्लासिफिकेशन, राइट। देन नेक्स्ट थर्ड स्लाइड, राइट। यू गो टू थर्ड स्लाइड। कटेगी, कुछ नहीं आ रहा अब। मेरी स्क्रीन तो पहले से ही कुछ नहीं आ रहा। आज भी कटेगी अब तो। अच्छा अभी आई थी थोड़ी देर के लिए। हाँ भाई मैं स्क्रीन शेयर ही कर रहा हूँ, राइट। स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। नो सर। हाँ, और आ रही है, राइट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन मैसेज, आई विल रिप्लाई दैट। सर स्क्रीन नहीं आ रही। ये सिलेबस में सिर्फ सेरेमिक नहीं है, फिर उसके नीचे का कोई भी नहीं है? नहीं, एडवांस मटेरियल्स में आपका टूल मटेरियल्स जो है, इट विल कम इन द एडवांस मटेरियल्स, राइट। सर समझ नहीं आया आपने some क्या of बोला। the आपने क्या some बोला of the some सर of एक the बार आप ये वाली बात लिख materials दोगे? fall in advanced materials. सर बस एडवांस मटेरियल सुनाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मतलब Some of कैसे the मेटल और एडवांस आना है? कटिंग टूल मटेरियल जो है आपका, कटिंग टूल मटेरियल, कटिंग टू मटेरियल। हाँ, will fall in advanced materials. Some of the cutting tools material fall in advanced materials, right? कुछ भी क्लियर And नहीं है सर, सर लैग हो सर रही कुछ है समझ सर आवाज। में नहीं आ आपकी रहा। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है कुछ भी सर। क्लियर नहीं है अब सर। बहुत ज्यादा और ये सब कुछ समझ में नहीं आ सर रहा। स्क्रीन पीपीटी भी नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन पे। यस सर। यस सर। I am writing. सर नेक्स्ट टाइम से जूम ट्राई करना। कि जूम में नेट वो कोई दिक्कत नहीं होती है इतनी? तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर ये नहीं है, ज्यादा नहीं ले सकते हैं उसमें शायद। सर होती है हमारी क्लास जूम में? सर फिजिक्स की क्लास होती है हमारी जूम पे। सर 75 हो जाएंगे, काम चल रहा है रूम सर। पे ज्यादा नेट लगता है भाई। माइक्रोसॉफ्ट मीट से ही भाई। और सर का वो काम नहीं कर रहा ना, तो क्या फायदा। उनकी क्लास में तो प्रॉब्लम नहीं है था, राइट। तो that is the classification. Now I go to that third slide, right? कुछ भी Right. समझ नहीं आ रहा। It is voice indication is coming on my screen, सर right? सर आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, उस स्क्रीन टाइम शेयरिंग थोड़ा ठीक बंद कर होता है। दीजिए, उससे वॉइस थोड़ी बेटर हो जाती है। जब आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देते हो ना तो वॉइस थोड़ी पीडीएफ बेटर साथ आती में है। ओपन करके देख लेंगे ना। सर आप तो राइट ही देख समझ लेंगे। आ रहा है बस। हाँ सर, अभी मैं क्या कर देता हूँ, एक नया लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, यू जॉइन दैट वन। ठीक है सर, ग्रुप पे डाल दो। ओके सर। ओके सर, ओके सर। ओके सर, ओके। ओके सर। ओके सर। मिलते हैं सर उस ग्रुप ओके में। सर। ओके सर।
आप बंद करो तो मैंने मम्मी को कहा था हॉटस्पॉट ऑन करना, बंद करके चली गई। यीट। अरे भाई क्या बोला सर ने? सर जो ने बोले बोला कि सर ये तो दूसरा लिंक भेज रहे हैं, वहां आ जाओ। लेट्स गो बॉयज। आधा घंटा तो इसमें निकल गया, 20 मिनट। Right. सर आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, शुरुआत से ही आ रही है मुझे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे एंड से। सर अब आपकी भी आ रही है। यू आर आल्सो ऑडिबल। I think in previously login is with the Ipto ID, right? Now I am logging with my personal ID, right? That may be problem maybe. I don't सर अभी भी थोड़ी एको हो रही है। ठीक है, know. समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? तो काम चलाने लायक है। So where is that? I will open that file. स्क्रीन मत शेयर करो सर, अपने आप पीपीटी देख लेंगे। हमने आप साथ में देखो खोल ये लेंगे। इंटरनेट इशू पीडीएफ है साथ सर। में खोल लेंगे। ठीक। दिख रही है ना, मगर स्क्रीन तो दिख रही है ना? हाँ दिख सर रही है। दिख रही है, दिख रही है। आवाज तो रहने दो, दिख रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन आई विल स्टॉप द शेयरिंग्स, राइट? ओके सर। Okay. So I will go fast for the first three slides, right? Materials means we will deal with the only solid materials, engineering materials. They are basically classified on chemical makeup, means your chemical compositions, atomic structures, maybe crystalline, non-crystalline, it may be amorphous, like just like a glass, and the use of materials, right? Right? They may be a springs, right? And other materials, right? Depends on its applications, right? So most of the materials will fall one or two groupings, right? It may be possible, and some of the materials is having the properties in between, right? Just like a ceramics, right? Ceramics will fall in between the metals and non-metals, right? Some of the properties are of metals, some of the properties of non-metals. So again,
the common engineering materials that will fall within the scope of the material science and engineering may be classified into one of the following groups, right? So this is the classification. Metals may be ferrous or non-ferrous and its alloys, right? Second one is the ceramics. Ceramics is not in our syllabus, right? So, but it's a classification of the materials. Organic polymers. Most of the polymers which we are using in day-to-day lives in engineering applications also, these are the organic polymers. Composites, it is in our syllabus. And semiconductors and biomaterials, right? These are not in our syllabus. Advanced materials, right? The cutting tool materials, some of the cutting tool materials will fall in advanced materials. So as for our syllabus, right? Metals and alloys, right? So in metal alloys there are two classifications, right? So ferrous and non-ferrous, right? First we will see the ferrous materials, right? So in ferrous materials, the classification is like steels and cast iron, right? So how it distinguish between steels and cast iron, we'll see later on, right? And there are the 5 types, right, of the cast iron, that is gray iron, ductile iron, white iron, malleable and compacted gray cast iron. That is also called CGI, right? Compacted gray cast iron. And steel, it may be a low alloy or high alloy, right? Low alloy means the alloying percentage, right, will be lesser one. In high alloy, right, we have to add more alloying percentage will be there, right? Ferrous will be lesser one, right? So again the low alloy is again classified low carbon, medium carbon and high carbon steel, right? And then again plain and low carbon alloy is again classified as a plain and high strength low alloy. Medium carbon, plain and heat treatable. High carbon is a plain and tool steel, right? High alloy, again they are classified in tool steel and stainless steel, right? Stainless steel is important for our syllabus and cast iron is also so Sir, is important. sir, in low alloy, carbon content will be high. No, in low, you see, low alloy and high alloy, right? Alloy, carbon is a alloying element, right? In a low alloy, carbon percentage will be lesser one, right? But if you compare low, medium carbon and high carbon, right? Carbon percentage will be higher in high carbon steel, but you cannot say the high alloy is having a lower carbon percentage. Right? It's Okay, based sir. on the total alloying element, right? High alloy and low alloy is based on the alloying percentage, right? Right? But in low alloy, they are classified based on the percentage of carbon only, right? Right? So this is the classification, right? Today we will see the cast iron and its types. So before going to their classification, we will see the pure materials and alloys. What is the consequences that we are making the alloys and where the pure materials is being used, right? So commercially pure metals are used for various purposes. Aluminium foil, right? Copper for electrical conductors, nickel or chromium for plating. Nickel plating is there, chromium plating is there. Whatever you are seeing the pipes, steel pipes, right? They generally coated with the chromium, right? They are having higher finish, right? They will not get rusted, right? Whenever rust word will come, you have to see the chromium percentage, right? It is very important, right? As far as rusting is concerned for the ferrous material, right? And for gold for electrical contacts, right?
So these are the pure materials being used for specific applications. However, pure metals have somewhat limited properties, and these properties can be enhanced and modified by alloying. Right? So they don't have the strength. Right? Aluminum foil में strength नहीं होती है. Copper electrical conductor है, but they can easily means elongated, right, by hand, right. Even you cannot cut it, but it is very ductile, right. It is very ductile and malleable, right. So you can easily deform, right. An alloy is composed of two or more chemical element and at least one of which is metal, right? दोनों में से एक मेटल होना चाहिए. दो और दो से ज्यादा जो है, that is your alloy, and one should be a metal. That is the case in alloy, but in composite that is not the case, right? That is one of the difference between composites and alloy, right? आवाज आ रही है ना? Yes. सर ये जो केमिकल एलिमेंट्स है, इनमें एलिमेंट्स में मेटल नॉन मेटल कुछ भी ऐड कर सकते हैं मेटल के साथ? हाँ, देखो इसमें जैसे मैग्नीशियम है, मेटल के साथ ऐड हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं. जैसे कि आपका ग्राफाइट है, राइट, यू कैन ऐड द ग्राफाइट, कास्ट आयरन, right, it is there in the cast iron, graphite it will be there, right? So it's depend on the bonding. अगर strength है तो you can use it, right? ओके सर सर कास्ट आयरन वही होती है ना, लोहे की कढ़ाई जो हम जिसमें हम घर में खाना बनाते हैं? नहीं, वो स्टील होता है. That will not be cast iron. सर कास्ट आयरन फॉर्म ऑफ आयरन है क्या सर? प्योरिटी लेवल पे हाँ, कास्ट फॉर्म ऑफ आउट. आयरन है, उसमें ग्राफाइट होता है, राइट. अच्छा, वो डिस्टिंग्विश मैं बता दूंगा, एक डायग्राम है, राइट. नेक्स्ट स्लाइड में, राइट. तो बेसिकली क्या है कि आपका कौन सा भी मटेरियल है, एनी मटेरियल इज हैविंग एटम्स एंड देयर ओन अरेंजमेंट्स, राइट. सो दिस में भी बीसीसी स्ट्रक्चर्स यू ऑलरेडी स्टडीड, आई थिंक. बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर्स, राइट. बॉडी सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर and hexagonal stack structures, right? नो सर, नहीं पढ़ा, कैंसल हो गया Yeah, था ये चैप्टर तो. और स्टेट में पढ़ा था. in chemistry, I think you have studied it, right? In next year there is a one subject, engineering materials and metallurgy. So in that subject also you will see, but you know the atoms and their arrangements, right? Crystalline and non-crystalline material, right? So in this iron carbon diagram, right, if you see the bottom side, I have written there steel and cast iron, right? Steel and cast iron, right? So steel, if carbon percentage is up to 2.1%, right? Your x-axis is carbon percentage and y-axis is temperature, right? And this diagram is in the form of equilibrium, means condition is it should be in an equilibrium condition, right? This is equilibrium condition diagram, right? So by this diagram you can understand the difference between cast iron and steel, right? If the carbon percentage is about 2.1%, that is your cast iron, and if it is lesser than 2.1%, then it is steel, right? So what this diagram indicate, right? So iron carbon diagram, FE3C is a diagram, is a binary system diagram, right? Binary systems means two elements are there, right? Your water triple point, that diagram what you called triple point will be there, right? Water phase diagram, right? I think you have studied it, triple point and all these things, right? So what is there? Only one element is there, water, and it is converted into
gas phase or in a solid phase. Three phases are there: water, liquid, and gas and solid, right? But in this case, only iron and someone came. In this case, only two elements are there, right? That's why it is called a binary system diagram. And you see the different phases are there, right? Delta ferrite is there, austenite is there, ferrite is there, right? Alpha ferrite is there, right? And Fe3C cementite is there, lead burite is there, pierrite is there, right? So they are different phases, right? Whenever you cool the material, like you have a molten metal, you allow to solidify, right? In a specific manner, right? Right? अगर रैपिडली कूल किया तो अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट? और स्लोली कूल किया तो अलग फेज मिलेगा, राइट? अलग फेज में आपकी अलग स्ट्रेंथ रहेगी, राइट? सो इफ यू सी इन द राइट डायग्राम, राइट साइड डायग्राम, right? So it is possible to get a different structures, right? Different structures of the same materials, right? So you can get a FCC structure also, BCC structure also. एक्सक्यूज मी सर, सर कूलिंग से कैसे मतलब डिफरेंट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स? मतलब कूलिंग से ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है? कूलिंग से देखो, जो कार्बन परसेंटेज है आपका, कार्बन परसेंटेज एक चेंज हो जाता है, राइट? वन थिंग, एनवायरमेंट की वजह से, अगर आपने एनवायरमेंट कोल का है, राइट, एंड you allowed solidified rapidly, then it will absorb the carbon from the environment, and that carbon will form in the cementite structure. Fe3C will form, right? And it is a harder one, right? Okay, sir. One thing, and another thing is that time controlling, right? Time, अगर आपने time rapidly किया, that means you are giving very less time, right? So it will not, you are not allowing to solidify in a equilibrium conditions, right? So you can get a different structure also. BCC चाहिए था, FCC मिल गया, right? That is possible. क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट होने के लिए आपको एनर्जी आपको ये करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, राइट? एनवायरमेंट में, राइट? इफ यू आर अलाउइंग टू सॉलिडिफाई, दैट मीन्स दैट पार्ट इज गिविंग एनर्जी टू द एनवायरमेंट, राइट? सो एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, राइट? दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. Okay, sir. Again, this is in equilibrium conditions, and again there are different diagrams are there in non-equilibrium conditions, right? That you will study if you are from the mechanical or other branches, means production and industrials. That subject is there in the second year. So one thing, by these diagrams you can see the difference between cast iron and steel. Another thing you can see, cast iron melting temperatures, right? It is about 1157 degrees Celsius, right? Right? At 4.3 degrees Celsius, percentage of carbon, right? जो point लिखा हुआ है, सर ये टेम्परेचर वगैरह, सर ये टेम्परेचर वगैरह टेस्ट के लिए याद करने होंगे? देखो इसमें है, ये टेस्ट के लिए टेम्परेचर याद करने हैं, राइट? मगर जो देखो टेम्परेचर्स हैं अलग अलग बुक्स में, थोड़ा सा 2-3 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, राइट? अलग अलग बुक्स में जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है? 1536 डिग्री सेल्सियस. ये हाईएस्ट पॉइंट जो है आपका 1.36 है, ठीक है? तो वो आपको याद रखना है. हाँ, ये टेस्ट में आ सकता है. दिस इज इम्पोर्टेंट डायग्राम. इफ यू डोंट नो द
this iron carbon diagram, you don't know the metallurgy. ये थंब रूल है. आयरन कार्बन डायग्राम मालूम नहीं है तो आपको मेटलर्जी ये नहीं पता नहीं, क्योंकि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश स्टील एंड कास्ट आयरन. इक्वेशंस नहीं है, फेजेस नहीं है. व्हाट इज मीन बाय फेज, यू कैन डोंट नो. व्हाट इज द मीन बाय मोल्टन मेल्टिंग टेम्परेचर्स, यूटेक्टिक यूटेक्टर पॉइंट. यूटेक्टिक यूटेक्टर पॉइंट आई विल नॉट आस्क दैट वन, right? But differences, melting temperatures, right? That I will ask. The phases, what are the different phases are there, right? That I can ask in the exam, right? जैसे कि है ये अल्फा फेज का बीसीसी, अल्फा फेज जो है बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, राइट? वो सारी मतलब आपको पता होना चाहिए, राइट? ये अभी इसमें देखो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है कास्ट आयरन में, लोवेस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर इज अबाउट 1147 degree Celsius. You can get a molten metal at 1147 degree Celsius. But in the steel case, the melting temperature is higher than your cast iron, right? Cast iron से ऊपर है. So what it indicates, that means to make a cast iron, you need lesser energy. Lesser energy means lesser power, and the price will be less compared to your steel, right? Right. सर ये ग्राफ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, कैसे कैसे बना रखा है एक साथ इतनी सारी देखो values. आपके पास मोल्टन मेटल है, राइट? हाँ सर. यू आर अलाउइंग टू सॉलिडिफाई. ठीक है सर. ठीक है, तो इन्होंने दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, राइट? दिस डायग्राम इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स. सो they experimented and allowed to cool, right? कूल कर दिया उसको डिफरेंट वे में. हाँ सर. ठीक है, उसमें करने के बाद उन्होंने चेक किया, राइट, हर पॉइंट पे. तो उनको क्या क्या फेजेस मिल रहे हैं, राइट? कौन सा स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, राइट? एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट? सो दे गॉट particular phase in that region. Suppose the gamma phase is there, right? Gamma, it is written in the left side, right? So in that area they are getting only gamma phase, right? Austenite phase is a harder one, right? So they have named it, right? And they found that this area is of this phase, right? If you get this phase steel, then you are having a higher strength, right? अगर अपने कास्ट आयरन चाहिए तो you have to go about 2.1%. Then only cast iron is possible, right? How to get 2.1%? You have to control the temperature and environment, right? So that is possible. मतलब सर हम अलग से कार्बन डालते हैं, ये एनवायरनमेंट से कार्बन अलॉय बन जाता है मतलब. हाँ नहीं, हाँ, एनवायरनमेंट से कार्बन हो जाता है. एंड अनदर थिंग, इफ इट इज नॉट हैविंग द एनवायरनमेंट लाइक दैट, यू कैन ऐड कार्बन परसेंटेज. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ऐड सर. कर सकते हैं, राइट? मेल्टिंग के टाइम पे आप हाँ. क्या कर देते हैं, स्टील का स्क्रैप जो है, स्क्रैप मटेरियल कास्ट आयरन बनाते समय ऐड कर देते हैं. अच्छा अच्छा, दे ठीक है विल सर. टेक द प्रोपोर्शन, राइट? मैग्नीशियम इतना चाहिए, इतना ये चाहिए, सिलिकॉन इतना चाहिए, वेट ऑन वेट बेसिस और वॉल्यूम बेसिस उन्होंने फाइंड आउट किया, तो मोल्टन मेटल बनाते समय ऐड कर दी, राइट? तो आपको और पर्टिकुलर वे में कूल कर दिया, यू आर गेटिंग द कास्ट. ठीक है सर. पर मेन डिफरेंस स्टील और कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट का ही है ना, कार्बन परसेंटेज का. कार्बन कंटेंट का ही है, कार्बन कंटेंट का ही मेन. और इसमें एंड अगेन यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉपर्टीज आल्सो. जैसे कि आपका कास्ट आयरन है, ब्रिटल होता है,
steel is a ज्यादा हार्ड, stronger one, right? स्टील जो ज्यादा आपके स्ट्रांग होता है। यूटेंसिल्स है, आपके यूटेंसिल्स यूज होते हैं होम अप्लायंसेस में, दे आर मेड ऑफ स्टील्स। कास्ट आयरन के क्या एग्जांपल है मुझे? कास्ट आयरन जो इंजन ब्लॉक्स है, जहाँ पे आपका हेवी वाइब्रेशंस वगैरह चाहिए, जैसे कि कौन से भी मशीन्स के बेड ले लो, राइट? वहाँ मेन कंसर्न होता है कि वाइब्रेशन ना हो। It should ज्यादा स्ट्रांग पर स्टील हो गया। avoid the vibrations, right? In that case, cast iron is being used. आप ट्रैक्टर्स के इंजिन्स में सिलेंडर ब्लॉक देख लो, वहां पे आपका कास्ट आयरन का सिलेंडर ब्लॉक मिलेगा। राइट, यू विल नॉट फाइंड एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक ऑन द ट्रैक्टर और व्हीकल्स। यू विल ऑलवेज फाइंड द सिलेंडर ब्लॉक। इवन कंस्ट्रक्शंस के जितने भी आपके ये होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, दे आर मोस्टली यूजिंग द कास्ट आयरन सिलेंडर ब्लॉक, राइट? तो ये कार्बन कंटेंट बढ़ाने से हो क्या रहा है आयरन में, मतलब मेन, मतलब ज्यादा कम हो रहा है क्या, देखो, वीक हो रहा है? कार्बन बढ़ाने से आपका हार्डनेस बढ़ती है। अच्छा, कार्बन बढ़ाने से बढ़ती है, तो स्टील से ज्यादा हार्ड हुआ हाँ, कास्ट आयरन। देयर इज अनदर वन चैप्टर इज देयर, वन पॉइंट इज देयर, इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट, राइट? अलॉइंग एलिमेंट मतलब बोरान से क्या बढ़ेगा, सिलिकॉन से क्या बढ़ेगा, कार्बन से क्या बढ़ेगा, राइट? मैग्नीशियम, इससे क्या बढ़ेगा? इट इज देयर इन आवर सिलेबस। हाँ, दैट और विल सी। सर आपने दोनों के मेल्टिंग पॉइंट पे कैसे कमेंट किया था, स्टील और कास्ट आयरन के, मतलब ग्राफ से कैसे देखो, पता लगा? इसमें कास्ट आयरन में अगर देखोगे तो लोवेस्ट पॉइंट जो मोल्टन मेटल का है आपका है 1147 डिग्री सेल्सियस, 1147 डिग्री सेल्सियस, राइट? और स्टील का जो है वो उससे हमेशा ज्यादा रहेगा। 2.1 का लेफ्ट साइड देख लो आपका, that is of steel, you will always get the higher point compared to your cast iron, right? ओके सर। ठीक है, तो ये है इसका एक डिफरेंस। Now we will see the cast iron and its types, right? The term cast iron refers to the family of ferrous alloys composed of iron and carbon, right? So it may be ranging from 2.11% to about 4.5%, right? तो 4.5% से आगे क्यों नहीं है, right? Why we are not using about? Because it is becomes very hard and it will not be easily machinable, right? मशीन करके आप नहीं बना सकते हैं। तो 4.5 again, there is no industrial use as far as higher carbon percentage is concerned, right? तो अगला constituent जो है सिलिकॉन है is up to 3.5%, you can up to 3.5%। अभी ये रेंज जो दी हुई है, राइट, वो एप्लीकेशन बेस पे आप यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे कार्बन ज्यादा है तो आपका हार्डनेस ज्यादा मिलेगी, राइट? हार्डनेस ज्यादा है तो यू कैन use that part in specific application where you require the particular strength or hardness, right? वो हम देखेंगे अभी। right? Classifications, there are 5 types of cast irons. ग्रे कास्ट आयरन, देखो इसमें नाम पे बहुत ये रखना है, जो मतलब कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। ग्रे कास्ट आयरन इट इज इन ग्रे फॉर्म, कास्ट आयरन or spherical graphite cast iron, the atoms will be in the form of spheroids, right? White cast iron is in the white color, right? Malleable iron is having the malleability properties. Compacted gray cast iron, right? It is a compact one, right? So Sir, yes sir, cast iron is a type of alloy. it is a type carbon and this ferrous, right? Fe3C डायग्राम हमने डायग्राम देखा ना, इसमें भी आप देखोगे, right? It is a Fe3C is a binary system, and cast iron and steel both are alloy of your ferrous and carbon, right?
सर स्फेरॉइड कौन सी शेप होती है? स्फेरॉइड का शेप आपका स्फेरिकल शेप। अच्छा ठीक है सर। स्फेरिकल शेप्स का ये फायदा है कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, right? उसकी स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है, right? मतलब जो लैटिस होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा? हाँ, spherical shape. May I will show you the this microstructures, right? Microstructures कैसे रहेगा? तो you can not see by naked eyes. You have to go for the microstructure or any materials if you want to see the what is happening inside the material, right? So by these pictures, right? I have taken from this book. Another book. It is not in this Kalpakjan books or in that book, Hajra Chaudhary book, right? So in this case, right, there is no need to rememberize compositions, right? Each and every compositions, but you should know the just like a difference, just like a steel and cast iron. What is the difference, right? And there is no need to memorize grades also, right? So only applications you should remember, right? You see the applications, right? सर ये जो कास्ट आयरन की जो ये टाइप्स है इनमें बेसिक डिफरेंस है क्या, मतलब कलर के अलावा और क्या डिफरेंस है? कलर प्रॉपर्टी है आपका, मेलेबल और डक्टाइल हो गया, राइट? ये ओके एक सर। एक देखेंगे हम, राइट? कुछ ग्राफाइट फ्लेक्स में होते हैं, कुछ स्फेरॉइड्स में होते हैं। जो स्फेरॉइड्स है उसमें मैग्नीशियम ऐड किया जाता है जनरली, राइट? स्फेरॉइडिकल ग्रे कास्ट आयरन में मैग्नीशियम ऐड किया जाता है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड एक फॉर्म हो जाता है, राइट? मैलेबल कास्ट आयरन में, तो यू विल गेट द स्ट्रेंथ, राइट? तो they are having differences, we will see in the next slide, right? So in these structures for the gray cast iron, graphite exists largely in the form of flakes, right? जो microstructures है इसमें जो dark portions है that is of graphite flakes, right? Ferritic gray iron with the graphite flakes. This is the diagram. Actually, this diagram's explanation is microstructure of gray cast irons, magnification of 100x, right? Ferritic gray iron with graphite flakes, right? So what is happening with these graphite flakes, right? So graphite flakes are in the gray form. That's why it is called a gray cast iron, right? And fracture of these parts will follow the path along the graphite flakes, right? So अगर सर ग्राफाइट फ्रैक्चर फ्लेक्स पाथ क्या ज्यादा होता है? है, यस, फ्रैक्चर पाथ क्या होता है सर? फ्रैक्चर होना मतलब टूट जाना, राइट? तो ग्राफाइट अगर ज्यादा है, राइट, पार्ट्स में, राइट, तो जो क्रैक फॉर्म हो जाता है इसका, राइट, क्रैक फॉर्मेशन जो होता है ग्राफाइट फ्लेक्स के वहां पर ही स्टार्ट हो जाता है। ओपन फेज में अगर ग्राफाइट है वहां पे स्ट्रेंथ आपकी कम रहेगी, राइट, एंड इट विल सेपरेट द फेरस एटम्स, राइट? वहां से आपका फ्रैक्चर ये एलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? वहां से क्रैक प्रोपोगेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? एंड अगेन आफ्टर कंप्लीट क्रैक प्रोपोगेशंस एंड आफ्टर कंप्लीट द क्रैक प्रोपोगेशन फ्रैक्चर्स विल बी देयर, राइट? जैसे हाथ आपका फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ पैर इसने हो जाता है, सेम कंसेप्ट इज देयर, राइट? दो पीस में कन्वर्ट हो जाना, राइट? क्रैक फॉर्म होना, दैट इज इट्स फ्रैक्चर. So it is having negligible ductility, it is weak in tension, right, and strong in compression, right? Ductility नहीं होती है, right? टेंशन में वीक होता है, you cannot apply the tensile load, but it is
गुड इन कंप्रेशन, राइट. जहां पे आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, जैसे कि इंजन बेड है, बेड में क्या हो रहा है, मशीन का अपर साइड में लोड लग रहा है, बट इन द बॉटम साइड, राइट, ground is helping him, right? So it will be in a compressive forces, right? So in that case, always in machines beds are made up of gray cast iron. Another point is these flakes act as a stress razor, right? Stress form किया जाता है. Stress is nothing but force per unit area. As a result, gray iron has negligible ductility and is weak in tension, right? That is the cause, that is the reason, right, behind the your fracture, right. Although strong in compression as are other brittle materials, right. So it is of brittle materials, it is strong in compression, weak in tension, right, having negligible ductility, right. These are the properties of gray cast iron. The presence of graphite flake gives the material the capacity to dampen vibration, right, by internal friction, right. So vibrations के against में it will give the better result. This capacity makes gray cast iron a suitable and commonly used material for constructing machine tool bases and machinery structures. These are the applications of your gray cast iron. Understood this gray cast iron? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Right, sir. Yes, sir. Right, sir. सर इसमें क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं एग्जाम में? देखो अभी तो हमारा पैटर्न चेंज हो गया, राइट. Previously they will ask about the gray cast iron, we explain the gray cast irons with their applications and its properties and all this, right. Just now your pattern is changed. I have to take your 3 class tests and 2 surprise tests, right. So in surprise test I will ask the MCQs, right. So I can ask machine तो bed. कुछ डिटेल्स में ही होगा मतलब बहुत. I can ask the machine bed is generally made from the dash material. Right? I will give 3-4 means choices. You have to choose one choice. Right? Like that. सर ये सरप्राइज टेस्ट वैसे स्टार्ट कब से होंगे? कुछ कितने दिनों बाद? Surprise test I will take after first chapter. Right? फर्स्ट चैप्टर के बाद और मटेरियल्स के बाद. हाँ मटेरियल्स के बाद में ले. सर जो आपने अभी पीपीटी शेयर करी है वो पूरी चैप्टर 5 की है, मतलब उसके अलावा भी कुछ है या फिर सिर्फ पूरी पीपीटी में चैप्टर 5 ही है, मतलब पूरा फिनिश है चैप्टर 5 उसमें? नहीं. Whenever I will take the class, I will put that PPT only in the class. Right? So I have today I have given to you only about the cast irons and its types, right? Not about the steels. Otherwise, you will get confused. Right? Okay, sir. सर ने इतना सिखाया था या इतना सिखाया था, right? Okay, so according to Indian standards, gray cast iron is designated by FG. FG is nothing but स्टील चैप्टर में graphite flakes, right? तो जनरली जो इंडियन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है FG 200, FG 150, FG 10, right? तो FG है, FG means graphite flakes and it's a 150 is its tensile strength, right? 150 Newton per mm² or megapascal is a tensile strength. They are designated by this FG 150. Right. I think it's time over. My another class is there. Right. So ductile cast iron I will take in the next class. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Right, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू Sir.
थैंक यू सर।